हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये लैपविंग है, रेड लैपविंग इसको। एंड ज़रूर यहाँ पे एग्स है इसके, इसीलिए वो सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। लैपविंग्स आर द बर्ड्स, नॉर्मली दे गिव eggs on the nest, on the ground, and they make a small nest with 2-3 twigs रख के, and थोड़ा सा ब्लूइश कलर, ब्लूइश ब्राउनिश कलर में उनके एग्स होते हैं। 3 एग्स होते हैं जहाँ तक कि मुझे पता है। एंड बोथ द पेरेंट्स दे लुक आफ्टर द एग्स एंड द नेस्ट। दिस इज देयर नेस्टिंग टाइम एंड आप देख सकते हैं दोनों साथ में, एंड दे आर वेरी अलर्ट। आप ये जो लैपविंग है bird, she is a ground bird, but they can fly very far off, and they normally don't sit on the trees, but mostly they feed on the insects on the ground, and they walk on the ground. They sometimes fly far away. Even in the night they are very famous for their call. And I think this female lapwing, she has made a nest here, and she's guarding her nest, and her partner is just around her. So जैसे ही कोई आता है, and they make lot of noise, जैसे आपने अभी देखा. So this was a new thing for me to witness lapwing so close by. So now she's watching me. Lapwing की एक आदत होती है कि whenever there is a threat, they go away from their nest. जो भी उनका ग्राउंड में नेस्ट है उससे दूर चले जाते हैं, एंड वहाँ जाके दूर से वो कॉल करते हैं सो दैट कोई नेस्ट के पास ना जाए, किसी को पता ना चले कि वहाँ नेस्ट है. नाउ आई कैन सी हर देयर, यस सिटिंग, उधर दे बैठी है. यस, शी हैज मेड अ नेस्ट देयर. वो अपने एग्स पे बैठ गई, देखिए वो रे. यस, एंड इनकी जल्दी हो जाते हैं, चिक्स बड़े हो जाते हैं जैसे ही दे स्टार्ट फ्लाइंग. एंड देखिए कैसे बैठी हुई है. सो जैसे ही कोई जानवर आएगा, जैसे अभी देखा आपने, दे मेक लॉट ऑफ नॉइस. उनका कॉल बहुत ही तीखा और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट कॉलिंग. So it's a nice thing to see them.